Dilshad, Omkar, Harshada, Janvi, Navdeep, Nikhil, Rekha, and Sanya, Shida, Vinal, and Swayam. Hi everyone. Come on, you can wave your hands. There are emojis. How will I understand that you are listening to me? Okay. Can I request everyone to switch on the cameras? Thanks, Nikhil. Navdeep, thanks. Can I request everyone once again to switch on the cameras? Swayam, Janvi, Nikhil, can you switch on the camera? Okay, so I think I can see only Navdeep who has switch on the camera, and Nikhil. No worries. Okay. So first of all, students, I would like to welcome you all to the masterclass conducted by Hunarho. Now, before we proceed, I would like to congratulate you. Can anybody of you tell me why am I congratulating you? कोई बता सकता है क्यों congratulate कर रही हूँ आपको? Anyone? You can raise your hands as well. Think about it. क्यों congratulate कर रही हूँ? अभी अभी तो मास्टर क्लास शुरू हुआ है. I can see Navdeep smiling a little. Come on, Navdeep, think about it. क्यों congratulate कर रही हूँ? अभी अभी जो शुरू किया है. निखिल? ओके. सो आई वांट टू कंग्रेचुलेट यू ऑल क्योंकि आप सभी ने एक्सेल का जो कोर्स है, कुछ लोगों ने आप लोगों ने एनरोल किया है, कुछ लोगों ने कंप्लीट भी किया है, right? So first of all, I would like to congratulate you all to completing the Excel course. And okay, so Nikhil has written, ma'am, I we can't unmute. Oh, okay, no worries. You can write in the chat box. Whatever questions are there, you can write in the chat box. Okay, Dilshad has also written that restricted from unmuting. No worries. I'll do one thing. लास्ट सेशन के लास्ट में मैं सबको अनम्यूट करूंगी और जो भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, आप मैम को पूछ सकते हो एंड मुझे भी पूछ सकते हो. ठीक है. तो फर्स्ट मैं कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ सबको जिन्होंने अपने एक्सेल कोर्स में एनरोल किया है, अपना एक्सेल कोर्स कंप्लीट किया है. यू नो व्हाट, हमने बहुत सारे फ्री कोर्सेज, हम आपके कॉलेज आए, करीब 100+ बच्चे थे जिन्होंने सेमिनार या वेबिनार अटेंड किया था और उन्होंने फ्री कोर्सेज में एनरोल किया था. बट आज जब ये मास्टर क्लास हो रहा है, आई कैन सी ओनली फ्यू ऑफ यू who have come for this master class. So it shows that you guys are serious on your career. You want to do something in your life and you want to achieve something. So today you have taken the first step to excel in your life. When I say excel in your life, why I'm saying excel in your life? क्योंकि जो कोर्स आप लोग कर रहे हो या करने वाले हो, वो कैसा है, वो आपको लाइफ में हमेशा हेल्प करेगा. आप अपने करियर के किसी भी डोमेन में हो, चाहे आप कहीं किसी अपने डैड मॉम ब्रदर सिस्टर का बिजनेस ज्वाइन कर रहे हो, या आप घर में नॉर्मल अपने मदर अपने फादर को हेल्प कर रहे हो, या किसी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो. एक्सेल एक ऐसा टूल है जो आपको लाइफ के हर सेगमेंट में हेल्प करेगा. राइट और रॉन्ग? व्हाट डू यू फील? इतना तो कोर्स के आपको आइडिया आ गया होगा कि एक्सेल का यूज कहाँ होता है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सेल, राइट? कम ऑन, कैन रेज योर हैंड एज वेल. Okay, so to proceed further, I would now request Rekha ma'am
who is the one of the best faculty when it comes to Excel. She would like to show some demonstration of Excel, and she would also introduce you to the career trajectory of Excel. Rekha ma'am, on behalf of all the students and Hunarho, I would like to welcome you all for this session. All yours. You can continue. Now I'm able to contribute my answers. Thank you very much for introducing me. So I'll start with the sessions, and thank you to all the students who have joined these sessions. So I can say you can excel your life with the master skills of this Microsoft Excel. If you have, or if you have worked with this particular Excel, or I can say some part of this Excel, still you are able to achieve some kind of, or what I can say, upgradation in your life. Okay, so guys, let me introduce myself Rekha Adak. I'm working as a data science and analytics trainer. So today I'll be taking your this master class of Excel. So I think all of you might have went through the some of the classes of this free classes of the class. So may I know who have gone through the classes? In the chat box, you people can type. Yes, guys. Anyone? Yeah, Niyati. Very good, Niyati. So, uh, any other who has gone through some of the videos? Or let me know any of you have used Excel yet? मतलब कभी एक्सेल को खोल के देखा है कि एक्सेल होता क्या है? Why we need Excel? Okay, Dishan says no, you have not used it yet. Okay, fine. I'll make sure you'll start using it from today. Any other? Okay, fine. See, guys, in this particular means Excel is not only the thing which can be used by only the technical persons in the sense who are working in the IT sector or who are working at big positions. It's not like that. Excel can be used by anyone. उसको कोई भी use कर सकता है. Even you people can use it for uh, रिकॉर्डिंग योर डेली थिंग्स ऑल्सो. हमारा घर का बजट हम लोग उसमें डाल सकते हैं, हमारे घर के एक्सपेंसेस कितने होते हैं वो भी हम लोग वहां पे रिकॉर्ड कर सकते हैं. वी कैन मेक अ जजमेंट ऑफ योर बजट्स एंड योर एक्सपेंसेस एंड एवरीथिंग. हम वहां पे भी पर्सनल लाइफ में भी एक्सेल को यूज कर सकते हैं. So Excel is not, I can say, the thing which has to be used by only the technical people. It can be used by the people who are not technical at all and they can gain the knowledge. Excel इतना easy है कि आप अगर non technical भी हो तो भी आप उसको यूज कर सकते हो. ओके, so I'll start with the presentation, which is going to take you through the history of Excel, the uses of Excel, and what topic we are going to do the hands-on. Just a second, guys. Is the screen visible, everyone? Just put it in our chat box. Okay, so guys, so history of Excel will give you the overview about before Excel what we were using. Means Excel is not the thing which was developed earlier. So before using Excel, we used to make use of, or the people who were using the functions and the calculation part. That time, the first application which was similar to the Excel was VisiCalc, and it was developed in 1978 by Dan Bricklin and Bob Frankston. So ये जो था, ये जो VisiCalc था वो सिर्फ आईफोन या एप्पल के कंप्यूटर्स के लिए यूज होता था. And nowadays, you know, people, we are using any kind of computers. हमारे पास Windows भी है. Then we use the systems which are working on Linux, Unix, everything. So nowadays, Excel is getting used on
और इट इज गेटिंग यूज्ड ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म. प्लेटफॉर्म मीन्स आपका विंडोज सिस्टम है, आपका iOS सिस्टम है, आपका लिनक्स बेस्ड सिस्टम है, आपका ubuntu बेस्ड सिस्टम है, कोई भी सिस्टम रहने दो, एक्सेल उस पर चलता है. बट जो पहला एप्लीकेशन था जो एक्सेल के जैसे हमें फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर रहा था, दैट वाज बेसिक कैल्क. और वहां पे उसके लिए रेस्ट्रिक्शन ये था कि वो सिर्फ बेसिक लैंग्वेज एंड दैट टू एप्पल के लिए ही डेवलप किया गया था. सो आफ्टर दैट इन 1983 वो टेक ओवर कर लिया गया लोटस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने. एंड लोटस हैव डेवलप्ड 1 2 3 स्प्रेडशीट एप्लीकेशन फॉर दैट. Okay, but that was also not feasible for any other Windows systems. So Microsoft have introduced the first version of Excel in 1985. That was 1.0, and that was only for the Mac operating system. So gradually, the upgradation or gradually the development was there in the Excel versions. Now currently, the version which is getting used for the Excel is 2020. The current version of Excel is 2020, not 2023. Sorry, my mistake. हम लोग अभी जो करंट वर्जन यूज कर रहे हैं वो हमारा है 2020. तो गाइज दिस वर्जन ऑफ एक्सेल्स जो भी अभी डेवलप हुए हैं, these developed with some of the what I can say developments, means whatever drawbacks, I won't say drawbacks, but some advantages or some upgradation from the previous versions, it has been included in the next version. Nowadays जो भी हमारे Excel के version है, they are capable of doing lot of automation thing, and you can say the visualization thing, the formulas, the capability of Excel is much more, so that it can be used by any person for the personal life also, and for the industry life also, for the corporate life also, anywhere it can be used. Okay, so let's see what are the uses of Excel. Okay. So guys, on this side you can see we can make use of Excel in the education system, in the business, for setting up goals, and according to that goals for planning. बिजनेस ओनर्स भी इसका यूज कर सकते हैं हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए, जैसे मैंने कहा था कि हम हमारे पर्सनल लाइफ में भी इसको यूज कर सकते हैं. एंड data analysis and the data science, which is the means the field which is making use of Excel, uske ekdam extensive use jo hota hai, that is getting done in the data analysis and data science part. The daily progress report which is getting maintained by the teachers, that is also developed in the Excel. Then the career development. Okay, so what things we can do with the Excel? We can do keep totals with the Excel. Means हमारे पास अगर suppose I have multiple values, so with that values if I wanted to do total manually, I have to do it on the calculators, right? So on the Excel I have some inbuilt formulas or inbuilt functions, और some things with which I can do it. Means मेरे पास lakhs of values भी हो तो भी मैं उसके लिए with the help of Excel I can do that thing. Okay? Data analysis and interpretation. So data analysis and interpretation in the sense, if for example if I'm working as a manager, and if I'm asking some of my employees कि मुझे जो recent quarter गया है उसका सेल्स का रिपोर्ट दिखा दो, तो आई मीन टू से सेल्स का रिपोर्ट मीन्स क्वार्टर में कितना सेल्स हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है. आई वांट दैट एग्रीगेट वैल्यूज. आई डोंट वांटेड टू सी द एंटायर डेटा. So with the help of data analysis and interpretation, I can see the data in the visual forms, not in the tabular data. Instead of looking at the 1,000 rows or 10,000 rows, I can just see the important things through the graphs and pictorial representation. And you know, the human beings like to love the things in the pictorial format rather than having in the writings. Means अगर मैं कहूँ कि ये story पढ़ो, 10 minutes का स्टोरी है, उसको पढ़ो और देन उसका इंटरप्रिटेशन मुझे बता दो, तो इंस्टेड ऑफ दैट इफ आई शो यू सम पिक्चोरियल डेटा रिगार्डिंग टू दैट स्टोरी, that would be very much impactful. So the same thing goes in Excel also. Instead of going through the most of the tabular data, उसी tabular data पे अगर आपके analysis है in the form of graphs, then it is going to give you the much more detailed value and the interesting one. Okay? बहुत सारे फॉर्मूलाज है एक्सेल के पास, बहुत सारे डोमेन से अवेलेबल फॉर्मूलाज है. जस्ट हमने जो स्कूल्स में सीखे थे मैथमेटिकल फॉर्मूलाज है, स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलाज है, वो सारे फॉर्मूलाज यहाँ पे एक्सेल में ऑलरेडी अवेलेबल है. We can organize and restructure the data. We can filter the data. Goal seek analysis. Goal seek analysis is also getting used by the data analyst.
where I have to set certain goal and I have to check it out the parameters with the help of that parameters. If I'm making any changes in the parameters, how my goal is going to affect, how my goal is going to be achieved. जैसे मुझे एक क्वार्टर में इतना मुझे मेरा सेल्स करवाना है, तो वो सेल्स के लिए पैरामीटर्स क्या होना चाहिए, प्रोडक्शन इतने बढ़ने चाहिए, तो प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन का नंबर मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा, वो सब चेंज करने के बाद how it can be achieved, that is getting analyzed with the goal seek analysis. It's very user friendly, means any of the person, any person, just like अगर आप स्कूल्स में भी पढ़ रहे हो, आपको कोई नॉलेज नहीं है, आपको पीसी कैसे हैंडल करना कुछ नहीं पता है, स्टिल यू कैन मेक यूज ऑफ एक्सेल. इट्स वेरी यूजर फ्रेंडली, उसका जो यूजर इंटरफेस है वो बहुत ही इजी है. ऑनलाइन एक्सेस इन द सेंस, अगर मेरा डेटा सेट मेरे सिस्टम में नहीं है, मीन्स टू फाइल मुझे एक्सेल में यूज करना है, इफ इट इज नॉट देयर इन मेरे सिस्टम में नहीं है, तो मैं उसे ऑनलाइन कनेक्ट करके भी आई कैन टेक इट इन द एक्सेल. डैशबोर्ड बिल्ड करते हैं जो डेटा एनालिस्ट यूज करते हैं, जस्ट लाइक आई सेड कि एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है. इंटरैक्टिव चार्ट्स एंड ग्राफ्स, इंटरैक्टिव इन द सेंस आई कैन मेक यूज ऑफ सम फिल्टर्स. लेट्स सपोज से आई कैन क्रिएट अ इंटरैक्टिव चार्ट इन द सेंस, मुझे कुछ ईयर वाइज डेटा देखना है, तो मैं ईयर का फिल्टर बना के आई कैन filter the data by using that year. When dynamic formula आ जाता है, dynamic means एज अ यूजर, मीन्स अगर मैं कुछ उसको इनपुट दे दूं तो वो इनपुट के हिसाब से वो फॉर्मूला में चेंज होने वाला है. एंड ऑटोमेशन थ्रू एक्सेल, दिस इज गेटिंग अचीव्ड बाय द मैक्रोज व्हिच आर रिटन इन द वीबीए. मैक्रोज इज नथिंग बट गाइस, जो हम लोग रिपीटेशन में करते हैं उसको किसी एक फॉर्म में स्टोर करो और उसको यूज करो. दैट इज व्हाट you can say the automation through Excel. So see, these are just I have listed functions. Apart from this, there are many more functions available और users है जिसके साथ बहुत सारे टास्क अचीव किए जा सकते हैं. Okay? Then the next thing is what are the career opportunities available with Excel. मैंने जितने लिस्ट किए उससे ज्यादा career opportunities यहाँ पे available है. The first is what the data analyst. Okay? So data analyst आप अगर देखोगे तो currently people are running towards this field. Data analysis करना है, data analyst बनना है, data scientist बनना है, and there are many tools like Power BI is also there, then other things are also there. But guys, if you do analysis, you will get an interesting thing. Come to know, 80% of the corporate companies are still using Excel for data analysis part. If you see the tool, one of the tool that is Power BI, that is completely you can say the upgraded version of Excel, as both are products of Microsoft. दोनों भी माइक्रोसॉफ्ट के हैं और एक्सेल पे ही बेस्ट आपका पावर भी है. और जितना है कि ये सारे टूल्स अवेलेबल में मार्केट में नए नए टूल्स है, लेकिन एक्सेल को कोई अभी तक किसी ने रिप्लेस नहीं किया. एक्सेल इतना पावरफुल है, एक्सेल आपको उतना फ्लेक्सिबिलिटी देता है, एक्सेल उतना आपको सिंप्लिसिटी प्रोवाइड करता है टू वर्क विद दैट. तो डेटा एनालिस्ट कैन वर्क इन एनी ऑफ द डोमेन इन द सेंस वो फाइनेंशियल में भी काम कर सकता है, वो फार्मास्यूटिकल डोमेन में भी काम कर सकता है, वो एजुकेशनल डोमेन में भी काम कर सकता है, केमिकल है, any of the domain. So that data analyst is going to work on the data related to that domain and going to present the insights, the trends, what would be the upcoming trends, what can be done in the future. That things has to be predicted and analyzed by the data analyst. वो आप एक्सेल के साथ कर सकते हो. देन फाइनेंशियल एनालिस्ट, बेसिकली ये जहाँ पे आपके फाइनेंशियल फर्म्स होते हैं, जस्ट लाइक आई कैन गिव यू द एग्जांपल ऑफ ई क्लर्क्स व्हिच इज अ फाइनेंशियल फर्म. मेनी मोर आर देयर, एफएमसीजी कंपनीज आर देयर. सो वहाँ पे फाइनेंशियल एनालिस्ट की जरूरत होती है व्हिच वर्क्स ऑन द फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी. दे आर वर्किंग विद द एक्सेल, आई कैन से. अकाउंटेंट्स, उनके लिए तो एक्सेल ही आई कैन से भगवान है, वो सिर्फ एक्सेल को लेकर ही काम करते हैं. बिजनेस एनालिस्ट, दे आर also working with they are designing the business strategy and everything, and dealing with the clients and everything. So these people are also working with the Excel. Project manager, managing the teams, managing the project overview, how the project has to be go on, which team should work on which particular project, डेडलाइन क्या होगा, वो डेडलाइन कैसे अचीव किया जाएगा, तो इसके लिए भी दे आर यूजिंग, I can say, the Excel with the basic scenario. They can make work of or use of this Excel. Then administrative assistants, basically the people who are working in the operations departments of any of the company, they are also putting or using the Excel, maintaining the Excel sheets.
sales analyst, then HR specialist, supply chain analyst, marketing coordinator, research analyst, quality assurance analyst, healthcare analyst, then real estate, IT support, and education administrator. ये सारे के सारे जितने भी आपको करियर अपॉर्चुनिटीज दिख रहे हैं, इनका बेसिस सिर्फ एक ही है. इफ यू नो एक्सेल, यू कैन grow in any of the industry and you can achieve or you can get any of the career opening. But आपको एक्सेल में एक्सेल करना पड़ेगा, दैट आई कैन से. एंड मोस्टली सबसे ज्यादा यूज तो आई कैन से द टीचर्स आर डूइंग दैट फॉर. ओके, इफ यू रिमेम्बर गाइस, व्हेन यू वर इन द स्कूल्स, teachers used to make your progress card through the excel. So education administration में भी उसको यूज किया जाता है, टीचर सबसे ज्यादा इसका यूज करते हैं. So guys, this is what about the career opportunities, how you can make use of the Excel and the history of Excel. A somewhat short description I have given. Okay. So we will move on with the next topic, that is what the introduction to Excel. I assume that there are some people who are not yet gone through the Excel interface. Okay. So this is the quick overview of what is there on your window. So guys, before moving to the Excel sheet, I'll just explain you some terminologies related to the Excel. Now, Excel इतना कर रहे हैं, लेकिन Excel में होता क्या है actually, right? Excel is called as the spreadsheet, right? Spreadsheet in the sense, यहाँ पे आपके पास जो डेटा आपको उसमें स्टोर करना है, that data would be getting stored in the cells. Now, अब ये cells क्या होते हैं? तो cells are nothing but a combination of row and column. Okay, तो रो एंड कॉलम जो रहेगा वहां पे आपका सम डेटा वुड बी स्टोर. वो डेटा को सम हेडिंग हैज टू बी गिवन, वो हेडिंग दिया जाएगा आपका, एंड below that heading you are going to store some data. Okay, so I'll show you one of the Excel sheet and explain some terminologies. Okay, so I think you people are able to see. I have opened an Excel sheet where you can see the options like see, this is what I was talking about, the Excel sheet, okay, or Excel file, right? So guys, you can see in the starting there are certain options given. There are certain options given over here, or there are certain, you can say tabs are given over. So this is what file, home, insert, page layout, formulas, data, review, and view. So with the help of this, guys, you can do multiple tasks, or you can have what I can say, आप आपको जो भी एक्सेल के साथ टास्क करना है आप इसके साथ कर सकते हो. तो यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी एक फाइल ओपन करके रखा, दैट इज वन ऑफ द टास्क वी आर गोइंग टू डू. अगर आपको कोई नया फाइल खोलना है, इफ यू वांटेड टू, सो यू हैव अ ऑप्शन कॉल्ड एज फाइल. You just have to go over here. You can open a new file. If you wanted to save and everything, ये आप यहाँ से कर सकते हो. कोई न्यू फाइल ओपन करना है तो यहाँ से कर सकते हो, राइट? तो यहाँ पे आपको आपके एक्सेल के साथ जो भी करना है, आपके साथ ये सारे टैब्स अवेलेबल है. तो सबसे पहला टैब जो है, मीन्स फाइल में आपको फाइल ओपन करना है, सेव करना है, क्लोज करना है, व्यू ओपन करना है, दैट थिंग्स आर गिवन ओवर देयर. होम में आप जब जाओगे तो यू कैन सी गाइस, यू हैव दीज मेनी ऑप्शंस अवेलेबल. और एक आप इसके नीचे देखोगे ना, आपको यहाँ पे छोटे छोटे उसके लिए यू कैन सी दिस थिंग्स. ये क्लिपबोर्ड लिखा हुआ है, ये फॉन्ट लिखा हुआ है, ये अलाइनमेंट लिखा हुआ है, ये नंबर लिखा हुआ है, ये स्टाइल लिखा हुआ है, सेल्स एंड एडिटिंग. ये आपके लिए जो अवेलेबल ऑप्शंस आर अवेलेबल ना, ये सारे आपको इस मेन्यू बार में भी मिल जाएंगे, राइट? यहाँ पे भी आपको ये मिल जाएंगे कि आपके डेटा में क्या है, रिव्यू में क्या है. तो आपके होम के साथ व्हाट आर द क्विक ऑप्शंस अवेलेबल, आप क्या क्या कर सकते हो, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे अवेलेबल है, राइट? तो आपने अगर कट कॉपी पेस्ट करना है तो यू कैन डू इट फ्रॉम हियर. आपको फॉन्ट के साथ, आपके टेक्सचुअल डेटा के साथ कुछ चेंजेस करना है, राइट? दैट यू कैन डू विद दिस, राइट? देन अलाइनमेंट जो होता है, दैट यू कैन चेंज ओवर देयर. नंबर में कुछ फॉर्मेटिंग करना है, देन वी कैन डू विद दिस थिंग्स. कुछ फॉर्मेटिंग करना है सेल्स के साथ, दैट वी कैन डू विद दिस थिंग्स. सेल्स में अगर मुझे कुछ इंसर्ट करना है, डेटा रिमूव करना है,
कुछ एडिटिंग करना है, तो वी कैन डू विद दिस थिंग्स, राइट? सो गाइस, बेसिकली वेर एवर डेटा, हमारा जो डेटा है एक्सेल में, वो बेसिकली स्टोर होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स. नाउ नाउ व्हाट व्हेन आई से combination of rows and column means what? This A, B, C, D are nothing but columns. इनको columns कहा जाता है, and this 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनको rows कहा जाता है, right? So whatever I'm going to write here, मैंने यहाँ पे जो भी लिखा, let's say I have written my name. So you can see guys, side में देखो यहाँ पे, इसको कहा जाता है, दिस इज गेटिंग कॉल्ड एज द सेल. नाउ हाउ दिस सेल, इस सेल का अगर हम लोग देखेंगे, इसके लिए यहाँ पे आपको एक नेम दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एज A1, राइट? मीन्स इस सेल को आपको एक, मैं बोल सकती हूँ इसको एक एड्रेस दिया जाता है, ठीक? मीन्स मुझे आगे जाके किसी सेल को रेफर करना है तो मैं इसके साथ रेफर कर सकती हूँ. ये जो मैंने रेखा लिखा है, दैट इज नथिंग बट द वैल्यू इन दैट पर्टिकुलर सेल. तो हमारे जो भी सेल्स में वैल्यूज लिखे जाते हैं, उनको हम लोग रेफर करते हैं बाय कंबाइनिंग द नेम ऑफ कॉलम एंड द रो नंबर. ऐसे हम लोग उसको रेफर करते हैं, राइट? तो गाइस, ये आपके सेल्स है. वैसे वी आर हैविंग मल्टीपल सेल्स, राइट? बहुत सारे सेल्स हमारे पास अवेलेबल है हमारा डेटा स्टोर करने के लिए. अब ये क्वेश्चन कि व्हाई टू हैव दिस डेटा टू बी इन द रोज एंड कॉलम्स, वो उसी में क्यों स्टोर करना चाहिए? तो आई विल टेल यू द रीजन फॉर दैट. जब भी आपका डेटा, आप कोई भी डेटा फिलअप करते हो, आपने आपने आपके स्कूल लेवल में आपका, लेट्स से आपने 10th क्लियर किया हो या 11th किया है, आपने 11th में भी जब आपने एडमिशन लिया होगा, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया होगा, वो फॉर्म जब भी फिलअप करते हैं हम लोग, तो वो एक टैबुलर फॉर्म में ही डेटा आ जाता है, क्योंकि टैबुलर फॉर्म में हमें स्ट्रक्चर डेटा मिल जाता है. जो भी डेटा मैं यहाँ पे फिलअप करने वाली हूँ, उसको मुझे एक लेबल मिल जाता है जिसको हम लोग कॉलम कहते हैं. और इस टैबुलर डेटा के साथ हम लोग कोई भी ऑपरेशन किसी भी वे से परफॉर्म कर सकते हैं. मुझे जैसे डेटा को एक्सेस करना है, मुझे जैसे डेटा स्लाइस करके लेना है आधा नहीं लेना है, 1000 कॉलम्स है, 1000 रोज है, उसमें से मुझे सेलेक्टिव ही कॉलम्स लेने, सेलेक्टिव ही रोज लेने हैं. तो टू हैव दैट फिजिबिलिटी, टू हैव दैट व्हाट आई कैन से फिल्ट्रेशन अवेलेबल टू अस, हम लोग डेटा इस फॉर्मेट में स्टोर करते हैं, रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं, राइट? सो इन दिस पर्टिकुलर एक्सेल टॉपिक, ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया एक्सेल का. अभी एक्सेल में हम लोगों ने होम टैब के ऑप्शंस देखे. We will do some changes with the text and everything. Then we have some another option that is called as the insert. Okay, so see these are some other options available. Means if I wanted to insert some picture over here, कुछ एक pivot table ऐड करना है, कुछ shapes वगैरह सब कुछ ऐड करना है, कुछ charts को add on करना है, right? You can see I have this things line, column, bin, loss, कुछ slicer वगैरह, hyperlink को ऐड करना है. We can go through the insert. ये सारी चीजें हम लोग यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं. देन वी हैव द ऑप्शन कॉल्ड एज पेज लेआउट. पेज लेआउट मीन्स मेरा जो ये एक्सेल का पेज है, उसका मार्जिन क्या होना चाहिए, उसका ओरिएंटेशन कैसे होना है, वेदर इट शुड बी द पोर्ट्रेट, वेदर इट शुड बी द लैंडस्केप, उसका साइज कितना होना चाहिए, पेज ब्रेक वगैरह, ये सारी चीजें आपको लेआउट में मिल जाएंगी. एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द एक्सेल, दैट इज व्हाट द फॉर्मूला. जो मैं आपको बोल रही थी कि एक्सेल कम अप्स विद लॉट ऑफ फॉर्मूलाज, ठीक है? तो आपको यहाँ पे फॉर्मूलाज ये सारे मिल जाएंगे, लाइक रिलेटेड टू डिफरेंट डिफरेंट व्हाट आई कैन से कॉन्टेक्स्ट इन द सेंस, जो लोग फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं या फाइनेंशियल डोमेन से रिलेट करते हैं, उनके लिए ये सारे फॉर्मूलाज यहाँ पे अवेलेबल है. मीन्स आपको कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये पार्ट्स आर देयर, इफ वगैरह वगैरह वगैरह, मीन्स और नॉट ट्रू, एरर वगैरह आएगा तो उसके रिलेटेड कुछ टेक्सुअल डेटा मेरे पास आया है, उसमें कुछ ब्लैंक स्पेसेस है, वो रिमूव करने हैं, मुझे किसी का नाम ढूंढना है, एवरीथिंग वी कैन डू विद दैट. आई वांटेड टू फाइंड आउट द लेंथ एंड एनीथिंग, सो वी कैन डू विद दिस टेक्सुअल फंक्शंस. इंपॉर्टेंट पता है कि क्वार्टर का सेल्स बताओ, या अगर हमारा सेल्स पिछले महीने से ये महीने में कैसे बढ़ गया है वो बता दो, तो वहां पे हमें ये डेट फंक्शंस यूज करने पड़ते हैं. देन लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शंस, ये
डेटा हमें एक शीट पे है और दूसरे, दीज आर द एडवांस, आई कैन से एडवांस एक्सेल के फंक्शंस, ये सारे फंक्शंस हम लोग वहाँ पे यूज कर सकते हैं. Yes, mathematical trigonometry functions are also getting used. Okay, and there are other functions also, right? So this, I can say, the strength of Excel, which allows you to make use of. Okay, तो हम जो भी करेंगे एक्सेल के साथ, बाय we will be using some functions and sir formulas, right? The next tab is your data. Data में if you wanted to, just I said ना कि अगर मेरा डेटा मेरे पास यहाँ पे सिस्टम में नहीं है और मुझे यहाँ पे कोई फाइल यूज करना है, you can see I have these options from access, from where. Then if you wanted to do the sorting and filtering, then you have to wanted to change the data, some text to column, flash fill, कुछ डेटा में बहुत सारे जीरोस है या फिर ब्लैंक वैल्यूज दिख रहे हैं तो उनको फिलअप करना है, तो उसको कैसे करें, डुप्लीकेट्स को रिमूव करना है, व्हाट इज एनालिसिस. जब मैंने बोला ना गोल सीक एनालिसिस होता है, अगर मुझे ये टारगेट अचीव करना है चाहिए, वो अगर मुझे देखना है तो आई हैव टू गो विद दिस व्हाट इफ एनालिसिस, ग्रुप अनग्रुप सब टोटल, वेरी वेरी यूजफुल फंक्शंस, right? And this review and everything is related to the spelling checking and everything, and view is related with your page level, like a formula bar and heading and everything. Well, what should be viewed to you people on this sheet, आपको क्या क्या यहाँ पे विजिबल हो, ये heading, right, the speed lines and everything. Okay, these things. Okay, so before moving towards the function which I'm going to teach you guys, that is aggregate function, I will try to give you some, just a second, I'll open another. Okay guys, so the first function which we are going to learn is the aggregate function. Now aggregate function is one of 19 predefined, or to use 19 predefined functions with the help of aggregate. Now जैसे ही हमारे दिमाग में aggregate आ जाता है तो हमारे दिमाग में ये functions आ जाते हैं. Aggregate means aggregate functions will take lot of values, मतलब वो set लेते हैं values का. let's say अगर मैं कहूँ मैंने 10 values दे दी, the single value. So aggregate function are the functions which gives you only the single value as the output by taking some set of values, right? So Excel में we have some aggregate functions. ऐसे भी है मेरे पास sum है. Then I can say we have the count function. Then we have, okay, we have, whenever we have to write any of the function or when we have to write any of the formula, जो सेल हम लोग सेलेक्ट करते हैं ना, वो सेल में फॉर्मूला लिखने से पहले हमें इसके आगे लिखना पड़ता है इक्वल टू. मीन्स वो सेल का वैल्यू जो है ना, दैट वुड बी इक्वल टू when whatever formula we are going to give over there. ये सारे aggregate function individually भी available है. Then why this aggregate function again? ये aggregate function अलग से क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है? तो ये अलग से इसलिए यूज कर रहे हैं कि अगर मुझे इंडिविजुअल फंक्शंस का यूज करना है तो आई हैव टू रिमेम्बर दैट फंक्शन, कि सम के लिए ये यूज करो, एवरेज के लिए ये यूज करो, और बहुत सारे टर्मिनोलॉजी एनालिसिस फील्ड में आते हो या एनी अदर फील्ड वेयर द स्टैटिस्टिकल थिंग्स आर गेटिंग यूज, लाइक मीन होता है, एवरेज होता है, मीडियन होता है, वेरिएंस होता है, राइट? तो ये सारे वैल्यूज अगर हमें यूज करने तो मुझे वो रिमेम्बर करना पड़ेगा कि किसके लिए मुझे कौन सा एग्रीगेट फंक्शन यूज करना है, जो इंडिविजुअल अलग अलग अवेलेबल है. बट मेरे पास ये जो एग्रीगेट फंक्शन है, विच आई कैन से द मैजिकल फंक्शन, इट अलाउज मी उसको रिमेम्बर करने की भी कोई जरूरत नहीं है.
और आपने जैसे टाइप कर दिया, आपको उसने सजेशन दे दिया, आपको इसके बाद दबाना है टैब बटन, डोंट प्रेस एंटर। एंटर दबाओगे तो इट विल रेज द एरर, वो सिर्फ एज ही लेगा लाइक दिस। तो ये जो होता है ना, ये आपके एक्सेल को पता नहीं है, तो ये कहता है व्हाट इज दिस नेम, आई डोंट नो दिस नेम, राइट। तो दिस इज नथिंग बट अ एरर, राइट, जो हम लोगों ने गलती की है, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने फॉर्मूला, यू कैन सी, यहाँ पे लिखा है fx। fx मीन्स इट इज सेइंग मी व्हाट, इंसर्ट फंक्शन, इट इज सेइंग मी व्हाट। आपका फंक्शन जो आपको लिखना है, आप यहाँ पे लिख दो, राइट। आप फॉर्मूला यहाँ पे यूज करो, ठीक। आप फॉर्मूलेज लिखते हो, आपके खुद के डिराइव्ड फंक्शंस भी लिख सकते हो बाय यूजिंग जो ऑलरेडी अवेलेबल फंक्शन। हम एज अ यूजर, हम लोग इसको यूज करते हैं ना एक्सेल को, तो एज ए यूजर फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं। लेट्स से अगर मुझे कोई एक एक टास्क करना है कि दो नंबर दिए और दो नंबर से मुझे ये दिखाना है कि कौन सा नंबर बड़ा है, तो मुझे उसको कंपेयर करना पड़ा। कंपेयर करने के लिए वो वी विल डू व्हाट, इफ नंबर ए इज ग्रेटर देन नंबर बी, के लिए जो मैं यूज करती हूँ ना, इफ, दैट इज व्हाट माय फंक्शन। ये फंक्शन के लिए ना हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये एक्सेल में ऑलरेडी थिंग्स आर डिफाइंड ओवर देयर फॉर दिस फॉर्मूला। ऑलरेडी इसके लिए टास्क लिखा जाता है, ऑलरेडी सब कुछ लिखा जाता है, सिर्फ फॉर्मूला अपने टास्क के हिसाब से हमें यहाँ पे डिराइव करना पड़ता है या लिखना पड़ता है, राइट। नाउ गाइस, एज आई सेड कि एग्रीगेट फंक्शन कम अप्स विद, जैसे ही मैंने एग्रीगेट लिखा, आई गॉट दीज ऑप्शंस, function number. Here, the total, if you can see, 17 functions are already available. Now I have to tell मुझे कौन सा function use करना as a user, and whenever you are going to use it, you also have to tell what function you are going to use. आपको वहाँ पे कौन सा function use करना है, right? So let's say if I wanted to get the average, I'll be using average, right? Then we are having count also, count a, max, mean, some statistical functions which are getting used in the statistics, right? तो यहाँ पे इसके साथ हम लोग 19 functions के साथ इसको यूज कर सकते हैं। Second biggest advantage of aggregate function is that whenever Excel encounters any error, अगर मैं कोई function, if I'm using, will not give us the proper output. So aggregate provides options over there, whether you have to ignore the errors and everything. See over here, guys, I have this option, ignore error values, ignore hidden rows, ignore hidden rows, ignore nothing of the function. Then again, ignore hidden rows, ignore subtotal, ignore aggregate. So these are the options available with the help of which we can make sure we are ignoring some errors also, or wherever we don't want it to ignore, there we can set it as a 4. यहाँ पे हम लोग उसको 4 रख सकते हैं. Here, I wanted to check it out. What is the sum of rate, whatever sums, whatever rates are there, or you can say the total cost. This is one of the sheet where I have some work service cost and the total cost. So if I wanted to find out what is the total cost of everything, then you can see, guys, here we have the option or our function number 9. So इग्नोर करना है, तो पहले हम लोग विदाउट एरर इग्नोर करके चेक करते हैं, और इसके बाद मुझे देना पड़ता है ऑप्शंस के बाद, देखिए गाइस, आई हैव टू प्रोवाइड एरे. एरे इज नथिंग बट
On यहाँ पे आई हैव टू प्रोवाइड द रेंज, मुझे यहाँ पे रेंज प्रोवाइड करना है, तो आई गिव दिस रेंज। लेट्स से यहाँ से लेकर, लेट्स से मेरे जो फर्स्ट सम प्रोडक्ट्स आर देयर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डेटा है, यू कैन गो टू द एंड ऑफ द शीट। ठीक, इनके लिए मुझे क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है, मेरा टोटल कॉस्ट कितना हुआ है। ठीक, यहाँ पे प्रेस एंटर, यू कैन सी गाइस आई हैव गॉट द स्टेम। मुझे आउटपुट, दिस इज व्हाट एरर आई एम हैविंग ओवर हियर, यहाँ पे किसी ना किसी वजह से आई हैव गॉट द एरर, इस पर्टिकुलर कॉलम में यहाँ पे एरर है, एंड बिकॉज ऑफ दैट मेरा, so what I'll do now, I'll neglect the error. So let's give the number of, then I'll say ignore error values which is at the number 6. So let's take this, shift end and down arrow, press enter. See guys, see the difference of the entire values। यहाँ पे देखोगे हम लोगों ने 4 यूज किया था, इट मीन्स व्हाट, डोंट इग्नोर द एरर। ओके, यहाँ पे आई एम गेटिंग द वैल्यू, आई एम इग्नोरिंग, आई एम सिंपली, तो जस्ट लाइक दिस आई हैव मल्टीपल फंक्शंस, मेरे पास यहाँ पे 19 फंक्शंस अवेलेबल है एग्रीगेट फंक्शंस के साथ, दैट्स व्हाई एग्रीगेटेड इज गेटिंग यूज्ड एंड इट इज गिविंग मी what about intro of your aggregate function? There is one more function that is called as the count. View the total count or the number of records in the given data, वो आपको आपके डेटा के records दे देगा कितने हैं करके, right? I'll just remove this formulas from over here. So operation है या count function है, right? So I'm going to count these values, how many values are there, a total count. This is simple small data. Now just remember this, यहाँ पे जब आप कुछ भी डेटा सेलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पे इट इज शोइंग यू द काउंट, देखो 12 rows into one column, right? Unfortunately I'm just getting 8 values over here. Can anybody in the chat box tell me why we are getting like this? Yes, any of you? Chat box में बता दो। When I have selected all these rows, it was showing me 12 rows. Or 8 records. Now basically count is getting used to count the rows और ये सारे values, ये कितने values है एक column में? If count works horizontally, it goes with the records in that particular data. So here I have just got 8. Now we just look at the data carefully. Here you can see यहाँ पे 33. This blank is there.
Again, I'm having a number over here. Here I have textual data. Textual data means जो हम लोग characters में है. This is 23 is there, but it is along with mad. Then I have 22 over here. This is written as a text. It is actually a text. It is actually the characters. Now, if you see the numeric data, अगर आप देख पाओगे कि हमारे इसमें जो सिर्फ नंबर है ना, उसी नंबर को ही काउंट ने काउंट किया. It just simply ignores any blank, any textual data. This is a logical value, true and false, whether it is there or not. If the इग्नोर करते हैं, काउंट कहता है मुझे सिर्फ नंबर्स को ही काउंट करना है, मुझे और किसी को काउंट नहीं करना. I'll be counting only numbers. I'll be ignoring other people, right? So, but somewhere I have to count other things also. For example, अगर ऐसा कोई रो है हमारे पास या कॉलम है हमारे पास जहाँ पे आईडी दिया हो, आईडी को काउंट करना है तो आई कैन नॉट गो विद द काउंट ओनली ना, क्योंकि काउंट सिर्फ नंबर को काउंट करेगा और वो आईडी काउंट ही नहीं करेगा. तो इन दैट सिनेरियो व्हाट हैज टू बी यूज्ड, so there we have to make use of count a function, right? So count a is going to count now guys. Again I have got what, again this is the same data, right? ये आपका पूरा डेटा सेम ही है, 12 रोज ही है यहाँ पे, but here we are getting 11 counts. 11 counts कैसे? Now it has, but यहाँ पे इसने ब्लैंक को काउंट नहीं किया. Count a function is going to count only those rows where it is going to have the values. If it is blank, it is going to ignore that. Count A will say, give me anything. I'll count, but I'll not count blank. I'll not take that blank in the consideration. So count a function will count anything except blank. Okay. Now somewhere in the sum data, we have lot of data. And if you wanted to see in that data, whether we have any blanks or not, okay. So to count the, okay. So count blank के लिए भी I'm giving the same data, guys. How many blanks we are having? We are having 1 and this 2 blanks. So count blank will just, as the name suggests, that's it. Okay. Okay, fine guys. So we have seen these two functions, aggregate and the count functions. Count functions के variation. So I will stop these things over here. Okay, fine. So let me know, guys. And so I'll stop presenting my screen. Any doubts? Who are having any doubts, you can ask me in a chat box. Okay, Rekha ma'am, what we can do is we gonna unmute all of them और जिसको भी डाउट होगा वो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं. So now they can unmute themselves. Okay, ma'am. Yes, guys, any doubts related to the what should be the career options and everything, what you can do with these things? ऐसा कुछ है? Ma'am, if we do this basic Excel course,
So in Hmm. this basic Excel course, all the major parts are covered, or we need to do the advanced Excel course? I think you have gone through the videos, right? No, ma'am, I haven't gone through the videos, but I have used basic Excel. In basic Excels, can you just give me the topics names, what you have gone through, just examples? Ma'am, actually, I have been doing an internship, so I was under an HR. Okay, So fine. I was just practicing under an HR. I haven't practiced it by myself. That's why Okay, I've joined this course. okay, fine. So, uh, if you have gone through like making the graphs, making the pivot table, then it's fine. It's okay. Okay, ma'am. Okay. Any other student? Any doubt? Okay, I don't think so, ma'am. They have any doubt. So again, we are at the end of the session. So on behalf of the entire MGM student and Hunarho, I would like to thank you for conducting this informative session. जहाँ पे आपने उनको करियर बताया एक्सेल में एंड देन you have taught some basic concepts right from the cell, right from the column, right from the rows. I'm sure they must have learned something from this particular master class. Thank you so much. Okay, now Most I would welcome, just ma'am. like Thank you to. for giving me this opportunity. You're welcome, ma'am. So I would just like to, inform all of them कि yes, many of them must have gone through the self-paced course of Excel. But we are soon launching an advanced course in Excel. They can enroll themselves. Not only this, but we do have, digital marketing course. We do have, a retail banking course. सो अगर इस पर्टिकुलर मास्टर क्लास में कोई बच्चा है जो अपना करियर एक डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में बनाना चाहता है या बहुत सारे कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे जो उस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं they can enroll in this course and this course comes with 100% job guaranteed. सो इसमें सिर्फ आपको नॉलेज ही नहीं दिया जाएगा बट आपको इंटरव्यू के लिए प्रेपरेशन, how to face the interview, the practical things, the capstone project, everything will be taught. Yes. So, do you have any kind of queries regarding to that? You can ask me. You can write in the chat box as well, or else you can, unmute yourself and ask questions. Okay, no question so far. Just one question I wanted to ask you all. आप में से कितने लोगों ने जो हमारा एक्सेल का सेल्फ पेस कोर्स था वो कंप्लीट किया है या वो किया है? कैन यू जस्ट रेज योर हैंड? आई जस्ट वांट टू सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉन थ्रू द वीडियोस. I cannot see any of them raising their hand. No, none of them. I have just enrolled. We'll be seeing the videos from today. So this is written by Dilshad. Thank you, Dilshad, for your response. Any other? आप में से कोई किसी ने भी वीडियो लेक्चर नहीं किया है? Okay, I can see एक और hand raise हुआ है. वो किसका है? Let me just. No. Any other student? Okay, नियति. नियति ने ये कोर्स. नियति आपने ये कोर्स पूरा कंप्लीट किया है या अभी धीरे-धीरे कर रहे हो? Seen some videos and some are remaining. ओके तो नियति जब आप वीडियो देख रहे थे आप समझ पा रहे थे जो उसमें इंस्ट्रक्टर पढ़ा रहा है? जस्ट वांटेड टू योर फीडबैक ताकि जो हमारा नेक्स्ट कोर्स है हम उसको इम्प्रोवाइज कर सके. हाँ लाइक बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है हर चीज तो समझ में आ रहा है. ओके सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. थैंक यू नियति. एनी अदर स्टूडेंट? सो फार आई कैन ओनली सी नियति. एनी अदर स्टूडेंट? किसी ने भी नहीं किया कोर्स?
Okay, Dilshad has written, actually I thought after this session we need to watch videos. Okay Dilshad, ऐसा कुछ भी नहीं है. जो प्रोसेस था वो ऐसा था कि जो फ्री कोर्स है, जो वीडियो के कोर्सेज है, आप लोग कभी भी कर सकते हो. और जब भी आपका कोर्स खत्म होता है तो हम एक मास्टर क्लास लेते हैं, ताकि वो कोर्स करते वक्त आपको जो भी डाउट था, कोई क्वेरी है, तो आप हमसे आके इस लाइव सेशन और मास्टर क्लास में पूछ सको. नाउ इज दिस क्लियर? Okay, Navdeep has written no ma'am. So Navdeep has not done the course, right? Yes, ma'am. Okay, so no worries. जिसने भी कोर्स नहीं किया है, I would request you all, you can go back, complete your course. देखो एक आप आगे लोगों के साथ कोई पेड कोर्सेज में enroll करो नहीं करो, that's not our motto. our motto है इसकी, जब भी हमने आपको कोई स्किल दिया है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, चाहे आप हमारे साथ रहो ना रहो, बट वी वुड वांट यू टू टेक दैट स्किल, क्योंकि आगे जाके लाइफ में आप कहीं भी जाओगे ये सारे स्किल्स आपको काम आने वाले हैं. And you need not pay for that, so why not to complete your courses and add the skills in your resume. I'm sure it will add on value. Why? क्योंकि see I am also in the organization, और मैं भी काफी बच्चों को हायर करती हूँ, एज एन इंटर्न हायर करती हूँ, एज अ एम्प्लॉय हायर करती हूँ. कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी मेरे मुझे कोई भी अप्लाई कर रहा है, अगर मुझे ये पता होता है कि ओके इस पर्टिकुलर बच्चे को एक्सेल आता है, आई एम वेरी हैप्पी. क्यों? क्योंकि जैसा मैम ने आपको बताया, एक्सेल डेटा हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर बिजनेस में काम आता है. सो दिस इज एन एडेड स्किल. आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन to just enroll in the free course, do this, and if you like it, do get in touch with us and enroll yourself in the advanced Excel class with Hunarho. And anytime if you have any query with regards to your career, और कौन से कोर्स में enroll करना चाहिए, करियर को कहाँ लेके जाना चाहिए, please feel free to get in touch with me. I will be more than happy to guide you or assist you in your career, making decisions. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you everyone for coming and joining in this session. Thank you, Rekha ma'am. I think there are still participants. You can, if you have any other question, you can ask me, or else you can leave the session. कोई question है? किसी को कुछ पूछना है? Okay, you can get in touch with your college as well if you have any other question related to Hunarho or the kind of courses. They will forward your queries to us and we will be more than happy to assist you. Bye bye. I can still see Sania, Razil, Omkar. हो या फिर सिर्फ लाइव सेशन में ऑन करके कहीं और हो? Anushka, you there? So we have 8 left. Anushka, Omkar, Aisha, Dubey. Okay, bye bye guys. Take care.